Okay. Today we can discuss about the salinity of the ocean. जो salinity है, that we know that ocean water always have a saline nature. तो ये saline nature कहाँ से मिला है, इसका फायदा क्या है, इसका distribution कैसा है, horizontal distribution, इसका vertical distribution, ये सब कैसा है, that is what we are going to discuss it today. A small topic है, but we can expect question from this also. So let's start our class. Okay, so ocean salinity, इसका मतलब है total content of dissolved salt in a sea or ocean. जो salty nature वो पानी को मिलता है because it contains certain sort of salt which is in dissolved form. वो देखने से नहीं देख पाएगा. Sometimes when it gets accumulated, वो accumulate होने से नहीं है तो when the water is taken to the land and it is being evaporated, and then we can see the residues or remainings of the salt. Then only we can identify, we can visualize that salty particles of the seawater. Otherwise, it is in dissolved format. And how it is dissolved? It is taken from either from this ocean floor or from the land. So इसमें दो concept है, but mainly it is being taken from the land से ही ये salt content या oceanic water में आया है. तो and it is been expressed as parts per thousand. तो ऐसा है, इसका एक्सप्रेशन करेगा नहीं, एक होगा परसेंटेज में, इतना परसेंटेज साल्ट होगा, इतना परसेंटेज साल्ट होगा, नहीं है तो असली में इट इज यूजुअली सेड इट एज parts per thousand. तो यहाँ in sea water it is almost 35 part on an average. There is 35 part per thousand gram of 1000 liter or 1000 liter of sea water में ऐसा है 35 parts per thousand है इसका amount. तो 1000 हो गया, and it is being expressed as the 3.5%. When it is converting to this parts per thousand को, when it is being converting, it can be said that the salt amount of seawater is almost 3.5%. उतना तक seawater में इसका percentage है, dissolved salt इसके अंदर होगा. And the salt ion content mostly comprises of sodium and the chlorine. Sodium chloride, that is the common salt. That is the highest content, salt content, which is present in the ocean water. तो ocean water में क्या है? Ocean water में जो salt dissolved है वही, इसके वजह से we can say the ocean water is saline. So that nature we can see it as the salinity of the ocean, and it is being expressed as parts per thousand. Parts per thousand होगा इसका expression, and usually when we say it is 3.5% of the total weight. अभी 100 ग्राम लिया है तो 3.5% वो ग्राम उसका weight का 3.5% क्या होगा? Salt content होगा. If we are taking 100 gram of water, इसका 3.5 grams इसमें होगा salt. So that is its proportion. And अभी सबसे ज्यादा salt content होगा the Great Salt Lake of USA में. USA का Great Salt Lake में है सबसे ज्यादा salt content. उसके साथ होगा Dead Sea में और होगा Lake Van में in तुर्की. तो इन तीन में सबसे ज्यादा है. When comparing Lake Van lake ना, उसमें ज्यादा होगा, that is almost 330 parts per thousand में होगा, 330. उतना ज्यादा इसमें है. That means almost 33% वो पानी में salt content है. And
when it comes to the Dead Sea, it is almost 24% इसका एक अभी 100 ग्राम पानी लेने से 24% इसका क्या है salt content है. And coming, that is Dead Sea, because its density is very high. We know that sometimes we can even walk over this Dead Sea. इसमें कुछ organisms birth कम है because of this hardness, because of its the water का hardness, इसलिए इसे बोलते हैं Dead Sea. And the Great Salt Lake में होगा 22%. तो उतना ज्यादा salt content है. ये याद रखना है, salt content ज्यादा होने से पानी का डेंसिटी अलग होगा और पानी का डेंसिटी ज्यादा होगा. अभी कोस्टल एरिया में सोचो, अभी एक कोस्टल एरिया में ऐसा एक एरिया है, तो इसका ग्राउंड वाटर अभी सी लेवल इतना तक आ गया, तो दिस इज सी वाटर, ये पूरा पानी है, एंड दिस इज द लैंड. एंड इफ यू लुक यू कैन सी द ग्राउंड वाटर ये हम बर्थ होगा. तो देयर इज हाई चांस अभी इसमें से इसका इन दोनों का मर्जिंग हाई चांस है, बट यूजुअली दिस विल नॉट हैपन. होगा एट स्मॉल एक्सटेंट इसका तो मर्जिंग होगा पानी का, बट देयर विल बी ए लिमिटेशन. इसलिए बिकॉज ऑफ द डेंसिटी वेरिएशन, दोनों का डेंसिटी अलग है. सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, सो इट विल स्टे एट सेपरेट, वो सेपरेट होकर बैठेगा. इसका मर्जिंग वाटर का वो मर्जिंग नहीं होगा. That is why even in coastal area, we are even near to the coastal area, we are having good groundwater or clean groundwater. इसमें salt content नहीं होगा. There will be merging only near to the coastal area. Remaining area में ऐसा merging नहीं होगा because of this density variation. ये याद रखना है. Why it is happening? Because of the variation in the density. And also one more thing you want to understand is isohalogens, lines joining places having an equal degree of salinity. ये पूछने का चांस है. Like isotherms, like equal temperature area, जो भी equal temperature area है, that we can say it as isotherms. अभी contour line वो iso lines है, that is also isoline, area having equal altitude है, height है, तो iso इसे बोलते हैं contour lines. Like the same, the area having equal salinity, we can say it as isohalogens. ये याद रखना है. Then coming to the origin, ये water, we know that most of the almost all area, 90% of the total coverage of ocean water consists of salty or salt परसेंट इसमें है. ये हो गया, लेकिन ये खुद से ओशन से नहीं आता है. दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द लैंड एरिया. ये साल्ट, द साल्ट कंटेंट ऑफ द ओशन इज नॉट क्रिएटेड विद इन द ओशन, इट इज बीइंग एडेड फ्रॉम द लैंड. ये कैसे होगा? ड्यूरिंग रेन क्या होगा? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.2 to 0.3% का कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इसमें है. तो सोचो, तो ये क्या हो गया? वो जब रेन आएगा, वो रेन के साथ ये नीचे आ जाएगा, सरफेस में आ जाएगा, एंड दैट इज बीन कन्वर्टेड. पानी है, H2O है प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये मिक्स होकर there is a formation of carbonic acid. तो कार्बोनिक एसिड का कन्वर्शन फॉर्मेशन होगा because of the presence of carbon dioxide in the atmosphere. Along with the rainfall, the water is been converting to carbonic acid. उतना high concentrated acid नहीं होगा, but still it has the ability to decompose or disintegrate the rock. जैसे the limestone area, we know that the karst region में है पानी का सबसे ज्यादा एक्शन. Usually when it's mixed with the carbon dioxide and when it's converting to carbonic acid, इसका सबसे ज्यादा एक्शन होगा the karst region में, और the limestone और the carbonate rock region में इसका ज्यादा एक्शन होगा.
because this limestone or the carbonate rock will dissolve in water. वो dissolve होगा. And what happens is there will be interaction between the rock and the carbonated water. And what happens? It will disintegrate or decompose, and it takes the salt. वो उसमें जो salt content है and the mineral content है, इसको dissolve करके, the process of dissolving rock material by fluvial action is called the solution. ये याद रखना है. When we studied about the fluvial process, I said about solution. यहाँ क्या हो गया? जो कार्बोनेटेड रॉक है ना, ये तो लाइमस्टोन है, उसको तो because of the action of the flow, because of the fluvial action, वो जो कार्बोनेट रॉक को इसको डिसोल्व करके ये लेके जाएगा. And the iron कार्बोनेटेड रॉक का जो साल्ट और मिनरल्स का जो आयन कंटेंट आयन्स है, उसको तो it will carry along with the runoff. वो जाते समय वो लेके जाएगा. And this is being carried, runoff लास्ट में आएगा, either it will come to a stream, छोटा स्ट्रीम में आ जाएगा, ना ये तो रिवर में आ जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप वेदरिंग, वो पानी ऊपर से आएगा, एटमॉस्फेयर से आएगा, it will mix with the, it will comes and it will interact with the carbonated or the limestone जो भी रॉक्स है इसके अंदर साल्ट है और नहीं है तो मिनरल कंटेंट है, इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, and it will erode that salt or it will dissolve that salt and it will take away with its movement. वो वाटर का मूवमेंट के वही along with that movement they will take the salt content as well, and finally it will deposit, it will take that to a stream or the river. So final end of the river or the mouth of the river, it always ends at a lake near to the plain area, or it will finally reach the ocean. Almost all the river, we know that its final destination is the ocean part. So finally a salt को लेके, a dissolved iron salt content को लेके, it will comes to the ocean. Of the dissolved iron, some अभी ये क्या हो गया, पहले ये तो इधर आ गया, सोइल ओशन में आ गया, तो इसमें से कुछ साल्ट को it will be used by organisms. अभी जो भी फिशेस हो, नहीं ये तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म algae हो, नहीं ये तो corals जो बनाता है ना, ये सब चीज they will use this for their activities. So it is being used by organisms in the ocean, and the remaining will stay with the water. वो remaining part है वो होगा, वो it will remain with the water. अभी ऐसे continuous अब ये पानी वो river end होगा ocean में, ocean वो लेके आएगा बहुत salt content को, and it will, वो dissolved salt है तो पूरा पानी में, oceanic पानी में क्या होगा, the presence of salt content. And if we look horizontally near to the coast, the salty nature is high because always there is deposition है salt content का. To the center there will be some वो थोड़ा कम है, but we can't say that on an average there is always 35 parts per 1000 होगा इसमें. But in the coastal area there will be high amount of salt content, the remaining of which is left for long period of time where it's concentrate and increase over time. This is not happened yesterday or day before that. It is happening for millions of billions of years ago. जब से ये sea और ocean का origin हुआ है, उसके बाद जब there is erosion and erosion, transportation and deposition by the river, wind, ये सब शुरू हुआ है. From that day itself, the process of adding salt content to the ocean is being started. So initially क्या होगा तब तो ये ocean water pure water था, but due to this process there is continuous addition or adding of salt water. ये हो गया. This is how
the ocean water gets its salty or saline nature. So what are the major salt that is being included in the sea? First and priormost one is the sodium chloride, the common salt. We know that how this sodium chloride or common salt is being extracted. ऐसा है, ओशन और सी का जो पानी है वो लैंड में लेके आ जाएगा एंड इट विल बी अलाउड टू इवापोरेट. वो लैंड सी का होगा, वो इसमें डाल देगा, लैंड का जो एरिया है उसी एरिया में लेके डाल देगा and it is being allowed to evaporate. And final remaining क्या होगा? There will be NaCl, that is NaCl, that is sodium chloride. That is how we are making the common salt. Even for our consumption, we are making the common salt from the seawater. So सबसे ज्यादा होगा this sodium chloride, and that is almost 77.7%. अभी 100% लेगा, साल्ट कंटेंट लेगा, इसमें से ऑलमोस्ट 3/4, more than 3/4 consist of the sodium chloride. फिर हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड. तो क्लोराइड का दो फॉर्म्स हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड होगा ऑलमोस्ट 10.9%. तो ऑलमोस्ट 90 और 89% हो गया this magnesium chloride and sodium chloride and this magnesium chloride. Then comes the magnesium sulfate, that is 4.7%. That so these three, sodium chloride, magnesium chloride and magnesium sulfate, form 95% of the total salt content. The remaining comes the calcium sulfate and the potassium sulfate. So 3 ये हो गया, तीनों सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम सल्फेट. Then sodium chloride and magnesium chloride. Sodium and chloride and magnesium chloride comes, so chlorides comes almost 89%. Then sulfates forms remaining 10%. इसका distribution ऐसा है. If you look this individually, you can see the सबसे highest percentage is for chlorine. That is 18.97. अभी parts ए तो this is salt grams per kilogram of water. 1 kilogram वाटर लेने से इसमें कितना ग्राम होगा? 18.97 ग्राम होगा क्लोरीन. Then 10.47 ग्राम होगा सोडियम. Then 2.65 हो गया सल्फेट. ऐसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटासियम है, बाइकार्बोनेट्स है, ब्रोमाइड है, बोराइड है एंड स्ट्रोनियम है. तो इतना सा परसेंटेज इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. सो दीज आर द मेजर सर. तो इसमें तो ये सब पढ़ने की जरूरी नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द सोडियम क्लोराइड एंड द मैग्नीशियम क्लोराइड. ये याद रखो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसमें से कुछ नहीं है. ये दोनों सोडियम क्लोरीन एंड द सोडियम कंटेंट इज सबसे ज्यादा है इसमें साल्ट. And the factors which affecting the salinity, this is very important. So what are the factors which influences the salinity of ocean water? There are many factors. Even the broadness of the ocean itself is a bigger factor. तो इतना बड़ा है, almost 70. अभी पूरा सरफेस लेने से भी ना 71% तो ऑलमोस्ट दिस इज ओशन, ओशियनिक एक्सटेंशन है इसमें से. तो वो ब्रॉडनेस इज इटसेल्फ कम्स द फैक्टर दैट अफेक्ट द सैलिनिटी. अभी पूरा हमारा ये लिया है सैलिनिटी और सॉल्ट कंटेंट ऑफ द ओशन लेने से सरफेस से इट विल गो अप टू 40 स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट तक. 40 स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट तक इसका थिकनेस होगा 40 स्टोरी. तो अभी ये पूरा साल्ट कंटेंट को हम अभी पूरा यहाँ से निकाल के, ओशन से निकाल के लैंड सरफेस में डालता है. तो इफ इट्स हाइट विल और इट हाइट विल कम्स अप टू 40 स्टोरी बिल्डिंग का, उतना बड़ा होगा इसका डिपोजिशन.
that much of salinity is for the, so salt content is presently in the ocean. So its broadness itself says the fact, the affecting salinity. तो इतना ज्यादा हो तो उतना सालीन फीलिंग होने था, लेकिन इसका ब्रॉडनेस है तो उतना ज्यादा नहीं आ रहा है. But when we say the other factors, the important factor is the ocean currents, then the temperature, which is temperature and evaporation we can take it together because temperature ज़्यादा होने से evaporation ज़्यादा होगा. Then the precipitation, then melting of ice, then the movement of wind and the landlocked areas. So these are the major factors. So ocean currents का कैसे है? Ocean current, how this ocean current influence? Ocean currents, we know that these are large currents which is moving throughout the ocean में ऐसा इसका movements हो रहा है. Whether it is Pacific Ocean, Indian Ocean, we know that different currents, equatorial current, Brazil current, बहुत कुछ currents है. वो पेरू currents है, cold currents है, warm currents है, drift है, ये सब आता है ocean currents में. तो this is always moving. वो ocean का जो पानी move कर रहा है, it will move horizontally as well as vertically. तो यहाँ क्या हो रहा है? Ocean currents, if it is moving, क्या होगा? यहाँ अभी बहुत ज्यादा पानी है, सोचो यहाँ, सॉरी यहाँ बहुत ज्यादा salt content है, तो ocean current यहाँ से move आ रहा है, and it is moving like this, and यहाँ बहुत कम है, तो क्या होगा? यहाँ से salt को लेकर इधर आ जाएगा. So it will affect the salinity. यहाँ का जो salinity ज्यादा था उसको तो थोड़ा सा निकाल के यहाँ डाल दिया, तो यहाँ कम था, so there will be moderate, वो इसे moderate करेगा. अभी सोचो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ का जो थोड़ा सा साल्ट था उसको भी लेकर ये वापस यहाँ जहाँ पे ज्यादा था उधर डिपॉजिट कर रहा है. So it will transport this salt content from one area to another. So that is how the horizontal current acts. Instead, if you अभी बोलेगा, हम बोल रहे कि the salinity will affect the density. तो density ज्यादा हो गया, क्यों? तो क्या होगा? जो ऊपर का है इसका डेंसिटी ज्यादा, ऊपर का वाटर है उसका साल्ट कंटेंट ज्यादा हो गया, तो इसका डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो ये नीचे जाएगा. वो वाटर जहां पे साल्ट कंटेंट ज्यादा है वो नीचे आएगा. सो देयर इज ए कन्वेक्शनल मूवमेंट, ऊपर से नीचे ये आ जाएगा. सो द करंट्स, यहाँ भी करंट्स है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो दैट विल आल्सो टेक्स द सैलिनिटी फ्रॉम अपर एरिया से लोअर एरिया तक, ऐसा कन्वेक्शनल करंट लेके जाएगा. सो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी नीड द ओशन करंट्स. सोचो अभी इक्वेटोरियल रीजन और नियर टू ट्रॉपिकल रीजन, इसमें ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा है, एंड पोलर रीजन में कम है. फिर ये क्या करेगा? यहाँ से जब ये करंट पोलर इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन में जाएगा, तो यहाँ से जो साल्ट है इसको तो लेकर वो पोलर रीजन में लेके जाएगा. So that is how the ocean currents work. Then comes the second one, that is the temperature and the evaporation. Temperature and the evaporation. तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर होने से क्या होगा? इवापोरेशन ज्यादा होगा. तो पानी, आप सोचो अभी एक बर्तन में थोड़ा पानी रख दिया है, इसके अंदर साल्ट कंटेंट है, तो इसका तो इवापोरेट करेगा, तो क्या होगा? द वाटर कंटेंट विल बी इवापोरेटेड, एंड थोड़ा सा 100% साल्ट है तो इसमें से 5 to 10% का साल्ट भी लेके जाएगा, बट रिमेनिंग विल गेट डिपॉजिटेड. सो इफ देयर इज हाई टेम्परेचर, there will be high salt content or high salinity, because the water will be get evaporated and it will retain the salt content. Salt को उधर छोड़ के पानी को लेके जाएगा. So where there is high temperature, there is high salinity. तो अभी सोचो, अभी इक्वेटोरियल रीजन में और पोलर रीजन में सोचो, तो इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा है एंड पोलर रीजन में टेम्परेचर कम है. सो क्या हो गया? इक्वेटोरियल रीजन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से बहुत ज्यादा इवापोरेशन भी हो रहा है. सो देयर विल बी हाई सैलिनिटी देयर, एंड एट दिस पोलर रीजन देयर विल बी लो सैलिनिटी बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर वेरिएशन.
and another one, so temperature and evaporation दोनों एक साथ में जाएगा. And the another one is precipitation. So precipitation means rainfall होगा, नहीं ये तो snowfall होगा. तो snowfall और rainfall होने से what will happen? There will be adding of water. Water add करेगा. अभी ओशियनिक रीजन है तो ओशियनिक रीजन में और ज्यादा पानी आ गया. पानी आने से क्या होगा? तो ये सालिन कंटेंट को डाइल्यूट कर दिया और डाइल्यूट कर दिया. अभी सोचो हम लोग एक करी बना रहे हैं तो उसमें ये साल्ट कंटेंट ज्यादा हो गया तो वी कैन ऐड वाटर. तो क्या होगा? वो पूरा साल्ट कंटेंट वो पूरा पानी में फैल जाएगा. तो क्या होगा? उसका सैलिनिटी कम हो जाएगा. जैसे प्रेसिपिटेशन इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. अभी पानी ऐड हो रहा है तो सैलिनिटी इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. So it is adding water. So precipitation will help to reduce the salinity, and instead insolation or evaporation will help to increase the salinity. And third one is melting of ice. So this will usually happens in the polar region. Polar region में क्या है? वो ऐसा वाला है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर, देयर इज नो सैलिनिटी. तो ये मेल्ट होगा तो क्या होगा? इट विल ऐड टू द ओशन इटसेल्फ. वो ओशन में ऐड होगा तो देयर आल्सो सैलिनिटी वो रिड्यूस करेगा. देयर इज रिडक्शन इन द सैलिनिटी. मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस मींस एडिंग वाटर टू द ओशन. ओशन में पानी ऐड हो रहा है तो उसी जगह पे वी कैन एक्सपेक्ट लेस सैलिनिटी. देन विंड. विंड ऐसा है, उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इसका नहीं है, बट इंस्टेड इसमें क्या हो रहा है? विंड मूवमेंट्स वो या अभी डिपोजिशन होगा बीच एरिया में और कोस्टल एरिया में डिपोजिशन है, साल्ट का डिपोजिशन है. तो विंड क्या है? इसको उड़ा के पानी में डाल देगा वो साल्ट को. तो उस एरिया पे साल्टनेस ज्यादा होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगा विंड एक्शन के वजह से. बट इट इज नॉट दैट मच एक्टिव लाइक टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और ओशन करंट के जैसा उतना एक्टिव नहीं है. फिर भी वी कैन एक्सपेक्ट ऐसा उड़ा के इसमें डिपॉजिट करने से देयर बी चांस ऑफ सैलिनिटी इंक्रीज. एंड आल्सो द मूवमेंट ऑफ ओशन, द डायनामिक्स ऑफ ओशन लाइक ओशन करंट्स, वेव्स, ये सबको एक्चुअली विंड हैज ए डोमिनेंट कंट्रोल ओवर ऑल दिस. अभी करंट हो, विंड, टाइड्स हो, जो भी हो, इसमें विंड का भी अपना इन्फ्लुएंस हो रहा है. सो ऑन लाइक दैट आई सेड ओशन करंट कैसे इसको लेके दूसरे जगह पे डालेगा. तो ऐसा ओशन करंट का मूवमेंट के पीछे भी देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ विंड. सो विंड, ज्यादा विंड होने से देयर इज चांस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द सैलिनिटी. सैलिनिटी ये ऐसा नहीं बोल पाएगा ज्यादा विंड है तो ज्यादा सैलिनिटी होगा. ऑफ कोर्स देयर विल बी, but not like as intensive as the temperature or the precipitation का उतना intensive नहीं है. And finally the landlocked areas. Landlocked areas means अभी ऐसा एक एरिया है, उस पानी है, उसका चार तरफ अभी लैंड है. these are land and this is water body. तो क्या होगा? ये तो एक बर्तन जैसा हो गया, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर पानी है एंड विथ साल्ट कंटेंट है. तो क्या होगा? इवापोरेशन इस जगह पे ज्यादा होगा. इवापोरेट होके साल्ट कंटेंट इधर ज्यादा होगा. लाइक द सेम ये भी ऐसा बर्तन जैसा हो गया, पूरा साइड में लैंड एरियाज है, इस चारों तरफ लैंड एरिया है. नहीं ये तो सोचो दो साइड में, तो ऐसा एक्सटेंशन है दो साइड में है. तो क्या हो गया? यहाँ इवापोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से यहाँ इवापोरेशन ज्यादा होगा एंड देयर विल बी हाई चांस ऑफ salinity. So landlocked area होने से भी there is chance of high salinity. So these are the major factors which influence salinity. इसमें तो देखो ocean current ज्यादा करेगा कम करेगा, दोनों का ये ocean current करेगा. But if the increase in temperature and evaporation, temperature, evaporation and wind action, yes sir, and landlocked areas, ये तीन क्या करेगा? salinity को ज्यादा करेगा. That this will increase the salinity of the ocean water. But instead here precipitation and melting means addition of water.
तो that will reduce the salinity. तो इस तरह we can identify, we can distribute, we can identify the saline content, how it is being influenced by these factors. Then comes the distribution of salinity. तो ये सब हम बोल दिया है, how the temperature, how the precipitation, how the melting of ice, how the currents, ये सब इसको influence करेगा. Based on this, we can simply say which are the areas where there is high salinity, which are the areas where is medium salinity, and which are the areas where there is low salinity. In general, if we take this horizontal distribution, at the center region, this is the center region, that is the equatorial region, and these are the poles, equatorial region and polar region, and these are mid-latitudinal areas. These are mid-latitudinal areas. If you look here, you can see equatorial region में इस region में देखने से you can see there are some areas where there is less salinity. यहाँ less salinity है through exactly near to the equatorial region. Why this happens? Equatorial region में we know that there is high temperature है, high evaporation है, evaporation भी ज़्यादा है, temperature भी ज़्यादा है. Because of that, there is high chance of increasing salinity, and at the same time, there is high precipitation also near to the equator. 4 o'clock rain के बारे में, when we have studied about precipitation, we have studied about the precipitation also. तो precipitation ज़्यादा होगा, तो यहाँ क्या है? There is reduction in salinity. That is why compared to its near tropical region से equatorial region आने से, there is some reduction in salinity, and salinity is comparatively less there. And next coming to that, there is tropical region. ये tropical region है. तो tropical region में सबसे ज़्यादा salinity you can expect at this point. After equatorial region, this is also near to the equator, between 23.5 degrees north and south, you can expect maximum salinity. Why this happens? Because the temperature is very high there. So temperature ज़्यादा है, evaporation ज़्यादा है, and because of the same, there will be high salinity. Then moving towards north and south of the tropical region. तो धीरे धीरे temperature कम होगा, there will be precipitation भी कम होगा, but temperature बहुत धीरे धीरे it will start reducing. जैसे temperature कम हो रहा है, like the same, the salinity also start decreasing. And at the polar region, there is very less salinity. ये region में बहुत less salinity है. Except some region, उसका कारण हम बोल देगा. अभी जो polar region में जाएगा, there is very less salinity. उधर insolation बहुत कम है, evaporation बहुत कम है. But if you look in Atlantic Ocean, the salinity almost reaches here. यहाँ तक आ रहा है. Why this happens? Because, as I said, landlocked area है. तो उधर क्या होगा? Temperature comparatively ज़्यादा होगा. Landlocked area में salinity ज़्यादा होगा. So this is actually Atlantic Ocean है. Atlantic Ocean region है. तो क्या हो गया? इसके दोनों साइड में उतना गैप नहीं है, जैसे पैसिफिक ओशन में. पैसिफिक ओशन में इतना लॉन्ग है, तो लैंडलॉक्ड नहीं है. लेकिन यहाँ इतना सामने, you can see the land. ये दोनों जगहों पे you can see. So that is why there is high salinity at these points. ये जो यहाँ तक इसलिए आ रहा है. This is actually the tropical region में ज़्यादा है, and tropical region से इस region में यहाँ ये दोनों जगहों पे ज़्यादा है. And this is also Indian है, Arabian Peninsula है, Indian Peninsula है. इन दोनों के बीच में this is landlocked area, and it is at tropical region. There is high temperature. But if you look at the polar region, and where there is no landlockedness, or there is broad land area, broad oceanic area, there is very low salinity. यहाँ भी ऐसा है, नीचे पूरा एरिया में लैंड नहीं है,
So, and that is a cool region. There is addition of precipitation, ice melt होगा उधर, पानी भी ज़्यादा हो रहा है. Because of the same, there is reduction in salinity उधर कम है. So this is how it is being distributed. Equator to the pole, equatorial region में कम है. Then coming to the tropical region, सबसे ज़्यादा salinity is at this area where it comes to the tropical region. Then moving towards the mid latitudinal areas, it will be average salinity. And when coming to the North Pole and the South Pole, the salinity is very less. Almost it reaches 31 parts per 1000, and at equatropical region it is 38. So on an average, we can say that that is why I said the average salinity is 35. So this is how the horizontal distribution of the salinity. Then comes, so इसमें I will say equatorial zone of relatively low salinity, excessive rainfall. Then tropical zones, 20 to 30 degree maximum salinity due to low rainfall and high evaporation or temperature, and temperate zone of low salinity, because both the temperature will start reducing, and subpolar region and the polar zones of minimum salinity. This is how it is being distributed. Then the vertical distribution. Vertical distribution में ये देखना है, from the top of the ocean to the bottom. At the top area, there is large variation of salinity. I said this is from equatorial region to the polar region. So polar region to the equatorial region, we know that equatorial region, so it's a tropical region. Just remove equatorial, there will be confusion. So there, let it be tropical region to the polar region. We know that salinity start decreasing. यहाँ से यहाँ तक एक कम होगा salinity. So at the top, there is large variation, 38 to 31 part हो जाएगा, उतना कम है. But at the bottom or the depth, the salinity is almost fixed. There उसमें उधर तो temperature variation नहीं है, addition of water नहीं है, सबसे ज़्यादा 4 kilometer, 5 kilometer. Even we said when we studied about the trenches, we said that it is going almost 11 kilometers. उतना तक जा रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब that much of depth is there. So there is no influence of temperature. उधर temperature का कोई भी influence नहीं है. Only there is high pressure and high density है उसी region में. So there is no influence of temperature. There is no influence of evaporation. There is no influence of precipitation. There is no influence of landlockedness. ये किसी का influence नहीं है. Because of the same, there is less variation in the salinity at the bottom. Always remains the same. That is near to the average, 35 parts per. And there is another thing you want to understand. In the tropical region, abhi low latitudinal area, tropical region mean when it's come, the salinity will decrease. Yes, region mean the salinity will decrease. Why? So tropical region in the upper area, when it's moved from top to the bottom, salinity will decrease. When it's move top to the bottom जाने से salinity will remain decline. इस क्यों कि यहाँ जो ऊपर एरिया है उधर salinity ज़्यादा है, 37-38 है. तो इधर से when it moves to the lower bottom, it will comes to 35. Even though the bottom remains 35 for high latitude or low latitude or जो भी हो, it will remain 35 है. लेकिन at the top area, the horizontal distribution, we know that at the low latitude area to the tropical latitude, tropical regions, the salinity will start decreasing from top to the bottom. But in opposite, at the polar or the high latitude area, the salinity will increase from bottom, from top to the bottom. क्योंकि
एट पोलर रीजन में क्या है, सैलिनिटी बहुत कम है, 31 और 33 है, लेकिन यहाँ कैसे है, ये एवरेज 35 ही सोचो, तो 35 है एट द बॉटम, तो 37 टू 35 हो गया लो लैटिट्यूड एरिया में, हाई लैटिट्यूड में 33 टू 35 हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया। Even though the bottom remains the same or the salinity is fixed there is changes only because of the vertical change in the horizontal distribution. Tropical area में ज्यादा है, temperate region में कम है। तो मिड लैटिट्यूड में क्या ऐसे होगा, हाई लैटिट्यूड में कम हो रहा है, नहीं ज्यादा हो रहा है, और लो लैटिट्यूड में कम हो रहा है। At the mid latitude there is no change, 35 होगा mid latitude में, and at the bottom also 35. So there is no increase or decrease in the salinity from its move to the top to from the top to the bottom. This is how it is being vertically distributed. So horizontal distribution हो गया, equator to the poles there is tropical to the poles there is decrease in salinity, but at the equatorial region there is always low salinity because of the too much of precipitation. And vertically in the low latitudinal areas kaisa hai, from it will decrease from top to bottom, and in high latitude area it will increase from top to bottom, and in mid latitude area it will remains the same. ये जो लेयर है from top to bottom ये लेता है, उसी टाइम में where there is very salinity variation in the salinity. अभी ऐसा salinity 35 है, suddenly it has went to 34, ऐसा कम होने का वो जगह को we can say it as halocline layer, halocline layer, ये याद रखना है। isohalane salinity कम है तो halocline होगा, the layer at which the salinity varies rapidly. Remember this term halocline. Then finally the benefit of salinity. अभी ओशन में salinity ज्यादा हुआ है, इसके वजह से क्या क्या benefits है? I said when there is high temperature there is high salinity, but when the salinity increases there is increase in the evaporation, there is increase in the density also, and for converting water to water vapor there need more temperature. If it is 100 degree चाहिए evaporation के लिए, boil water 100 degree Celsius में water boil होकर evaporate होकर जाएगा, evaporation शुरू करेगा. But if there is salinity this will not happen in 100 degree Celsius, this will increase. अभी 101 degree Celsius होगा, नहीं तो 102 degree Celsius में ही इसका evaporation होगा. So because of salinity क्या है, this will reduce the evaporation rate. So yeah, this is the creation, this is actually we can say the creation. salinity ज्यादा हो गया तो evaporation कम, इसलिए क्या है, पूरा ओशियानिक एरिया में कितना पानी होगा उसमें saline ऐड किया है, because of that comparatively there is less evaporation also, that is being managed. salt content होने से temperature ज्यादा चाहिए evaporation के लिए, water vapor to be converted to, so that is called evaporation. water to water vapor, that is called evaporation. evaporation का वो temperature है that has been increased. Same way it has increased the freezing point also. ये ठंडा भी नहीं होगा, अभी 0 degree में ice बन जाएगा, but if we add salt to the water 0 degree में the salt will not become an ice, it will go to -1 degree, between -1 and -2 degree में ही a salt water will become ice. So it will reduce the evaporation, it will increase the freezing point also. Freezing point में भी, तो अभी polar region में salt content होने से that will not be converted, same go back to
ऐसा कन्वर्ट होकर आइस नहीं हो जाएगा. So that is the benefit of adding salt to water. Then it affects the physical properties of ocean. What are they? The temperature, density, pressure, wave motion, and the currents. I said. ये कैसे है? Temperature कैसे करेगा? ये salinity ज्यादा होने से temperature का influence उसमें कम होगा. Salinity ज्यादा होने से density and the pressure ज्यादा होगा. Density ज्यादा होने से डेंसिटी ज्यादा होगा. डेंसिटी ज्यादा होने से इट विल मूव डाउन नीचे जाने का एक ज्यादा है. तो इसका मतलब है नीचे में ये फोर्स ज्यादा कर रहा है, पानी का फोर्स ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा. देन इट इन्फ्लुएंस वेव मोशन एंड द करंट. ये दोनों का मूवमेंट के लिए भी इसका, क्योंकि वेव मोशन एंड करंट्स इसका तो मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए, लेकिन डेंसिटी ज्यादा है तो मूवमेंट थोड़ा कम करेगा. अभी कुछ भारी चीज लेके जाने के लिए हमारे लिए, अभी हम 100 किलोमीटर स्पीड में जा रहे हैं, मेरे पास और ज्यादा वेट भी दिया है, तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आई एम कैरिंग ए लोड आल्सो. सेम वे वेव और करंट, जो पानी का वो मूवमेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी, वो थोड़ा कम हो जाएगा. देन दिस इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनिजम्स. ये साल्ट कंज्यूम करेगा फॉर देयर लाइफ के लिए, वो ऑर्गेनिज्म भी ये यूज करेगा. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द saline वाटर, सम ऑफ द बेनिफिट्स. सो दैट्स अबाउट द salinity. इसमें ये जो टर्म्स बोल दिया है वो याद रखना है. ये हैलोक्लाइन, आइसोहैलेन्स, ये सब नाम याद रखना है. ये 1 मिनट में पूछेगा, एंड ये चीज याद रखना है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग salinity, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में पूछने का चांसेस है. ओके, दैट्स इट. किसी एरिया में कुछ डाउट है? No. Okay. Can we stop? जी सर. Thank you, sir.